Prime Minister says centre and state government are working to restore peace in Manipur. Mr. Modi calls for collective fight against corruption, nepotism and appeasement. Government to launch Vishwakarma Scheme for traditional skilled workers next month. Prime Minister announces new plan to train women in operating drones through 15,000 self-help groups. Government to increase number of Jan Aushadhi Kendra from 10,000 to 25,000. And reports of Independence Day celebrations also pour in from states, union territories and Indian missions abroad. Prime Minister Narendra Modi has called for getting rid of the three sins of corruption, nepotism and appeasement from the country. Addressing the nation from the ramparts of Red Fort on the 77th Independence Day, he said, "It should be our collective responsibility to make India a developed country by promoting probity, transparency and impartiality." भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, ये चुनौतियां हमारे ऐसी चीजें पनपी है जो हमारे देश के लोगों का जो आकांक्षा है उसका दमन करती है। हमारे देश के कुछ लोगों के पास जो छोटा मोटा सामर्थ्य है उसका शोषण करती है। हमारे गरीब हो, हमारे दलित हो, हमारे पिछड़े हो, हमारे पसमानदा हो, हमारे आदिवासी भाई बहन हो, हमारी माताएं बहनें हो, हमने सबने उनके हकों के लिए इन तीन बुराइयों से मुक्ति पानी है। हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नफरत का माहौल बनाना है। Mr. Modi said the Triveni of democracy and diversity has the potential to make India's every dream come true. He said the country's progress is fueled by not only the big cities but also the tier 2 cities. He told the youth that there is no dearth of opportunities in the country for them. हमारा सौभाग्य है कुछ ऐसी चीजें हमारे पास हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दी है और वर्तमान कालखंड ने गढ़ी है। आज हमारे पास डेमोग्राफी है, आज हमारे पास डेमोक्रेसी है, आज हमारे पास डाइवर्सिटी है। डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी की ये त्रिवेणी भारत के हर सपने को साकार करने का सामर्थ्य रखती। आज पूरे विश्व में वहां देशों की उम्र ढल रही है तो भारत युवान की तरफ ऊर्जावान होकर के बढ़ रहा है। The Prime Minister said every rating agency of the world is commending India, which has become the world's fifth economy from the 10th rank when the BJP came to power in 2014. Every expert of the world is saying that India is unstoppable. The Prime Minister said the government will launch Vishwakarma Scheme next month with an allocation of 13 to 15,000 crore rupees to promote traditional skills. आने वाली विश्वकर्मा जयंती पर एक कार्यक्रम हम लागू करेंगे। इस विश्वकर्मा जयंती पर हम करीब 13-15 हजार करोड़ रुपया से जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, ज्यादातर ओबीसी समुदाय से, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए हम आने वाले महीने में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे और करीब 13-15 हजार करोड़ से उसका प्रारंभ करेंगे। Mr. Modi also announced that the number of Jan Aushadhi Kendras will be increased from 10,000 to 25,000. जन औषधि केंद्रों ने देश के सीनियर सिटीजन, देश के मध्यम वर्गीय परिवार को एक नई ताकत दी है। जिस संयुक्त परिवार में अगर किसी को एक डायबिटीज जैसा हो जाए 2-3 हजार रुपया दवाई का बिल स्वाभाविक हो जाता है। हमने जन औषधि केंद्र से जो दवाई बाजार में 100 रुपए में मिलती है वो 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपए में दी और आज देश में 1000 जन औषधि केंद्रों से मेरे इन बीमारी में जिनको दवाई की जरूरत थी ऐसे लोगों के करीब 20,000 करोड़ रुपया उनके जेब में बचा है। मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं अब देश में 10,000 जन औषधि केंद्र से हम 25,000 जन औषधि केंद्र का लक्ष्य लेकर के आने वाले दिनों में काम करने वाले हैं। About Manipur, Mr. Modi said that peace is slowly returning to the region and the country stands with Manipur. He said the path for solution in Manipur will be found through peace and the centre and the state government are making all efforts for solution and will continue to do so.
विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ, लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाएं और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के उन समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, करती रहेगी। The Prime Minister said continuous reforms are taking place to make the Indian forces young and battle ready. He said earlier people used to hear about bomb blasts, but today the country is feeling safe. He said we can focus on development when there is security and peace. आज देश सुरक्षा की अनुभूति कर रहा है और जब सुरक्षा होती है, शांति होती है, तो प्रगति के नए अरमान हम पूरे कर सकते हैं। उसको लिए सीरियल बम धमाके का जमाना बीती हुई बात हो गई है। निर्दोषों के जो मौत होते थे, तो बीते हुए कल की बात हो गई है। आज देश में आतंकी हमलों में भारी कमी आई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है, बहुत बड़ा परिवर्तन का एक वातावरण बना है। In the last 5 years, he said, over 13.5 crore people have come out of poverty and become part of new middle and middle classes. 5 साल में 13.5 करोड़ मेरे गरीब भाई बहन गरीबी की जंजीरों को तोड़ करके न्यू मिडिल क्लास के रूप में बाहर आए हैं। जीवन का इससे बड़ा कोई संतोष नहीं होता। मेरे प्यारे परिवारजनों, और जब 13.5 करोड़ लोग गरीबी की इस मुसीबतों से बाहर निकलते हैं, तो कैसी कैसी योजनाएं उनको मदद दी है। उनको आवास योजना का लाभ मिलना, पीएम स्वनिधि से 50,000 करोड़ रुपया रेहड़ी पटरी वालों तक पहुंचाया है। Mr. Modi said the world today is technology driven and India will play a crucial role in it. He said one thing that will take the country forward is women-led development, and we can proudly say that the country is leading in this area. It has the maximum number of pilots in civil aviation, and women scientists are leading the Chandrayaan mission. He said G20 countries are also recognizing the importance of women-led development. The government is also devising a new plan for the agri-tech sector to strengthen women's self-help groups. They will be trained in operating and repairing drones. The initiative will begin with the flight of drones by 15,000 women self-help groups. हम एक नई योजना सोच रहे हैं कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्रीटेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे। ड्रोन चलाने की, ड्रोन रिपेयरिंग की हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। Around 1,800 special guests from all over the country have participated in the Independence Day celebration at the Red Fort. Sarpanchs of vibrant villages, teachers, nurses, farmers, fishermen and Shram Yogis who helped to build the Central Vista project in New Delhi were among the attendees. On the occasion, Farmer Producer Organisation Scheme, Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme and Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana beneficiaries called on Agriculture Farmers Welfare Minister Narendra Singh Tomar. Talking to Akashvani News, Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare Kailash Chaudhary highlighted the government's dedication towards overall growth of the farmers. किसान कैसे आत्मनिर्भर हो और जब भारत विकसित राष्ट्र हो तो उसमें किसान की महत्वपूर्ण भूमिका हो, इसको लेकर निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जो योजनाएं बनी है, चाहे किसान सम्मान निधि की योजना हो, चाहे फसल बीमा की योजना हो या 10,000 FPO बनाने जा रहे हैं, वहीं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना प्रारंभ किया, ड्रोन से किसान खेती करे। इस तरह से जब किया जा रहा है तो उसको लेकर आज देश के किसानों में उत्साह था। Our correspondents talked to some of the special guests.
डूंगरपुर जिले की हूँ, गांव चिखली है। मेरा नाम ललिता पाटीदार है और मैं इधर बुलाया तो हमें बहुत अच्छा लगा और नरेंद्र जी मोदी को हमारे दर्शन हुए और उनकी तरफ से हम बहुत बहुत आभारी हैं। हमारा नाम भीम सिंह है, हम बाड़मेर जिले से आए हैं। किसान सम्मान निधि का लाभ हमें 14 किस्त मिल चुकी है, इससे बहुत बेनिफिट होता है। खेती करने के लिए भी अनुभव बहुत अच्छा रहता है। समय समय पर जो ये पैसे मिलते हैं तो उससे खेती कर सकते हैं और कोई भी बीज लाने के लिए उपयोगी काम ले सकते हैं और इसलिए बहुत आगे ऐसा होगा तो अच्छा ही लगता है। This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our Twitter handle @AIR News Alerts. President Draupadi Murmu visited the National War Memorial in the national capital and paid tributes to the martyrs on the occasion of 77th Independence Day. She laid a wreath at the memorial and paid homage to the martyrs. 13.5 crore. We apologize for that. The next news item. Indian cricketers extended their wishes on the 77th Independence Day. As people celebrate across the country, Virat Kohli, Yuvraj Singh, Ravindra Jadeja and several other notable cricketers took to social media to wish the countrymen a happy Independence Day. India's star batter, Surya Kumar Yadav, also extended his wishes. BCCI Secretary Jay Shah also wished the nation on the occasion. Reports of Independence Day celebrations also pour in from states and union territories. In Arunachal Pradesh, the main function was held at IG Park in Itanagar. Chief Minister Pema Khandu hoisted the national flag, which was followed by a ceremonial march past by various uniformed contingents, NCC cadets, scouts and guides, and school children. In Mizoram, the main function of the 77th Independence Day was celebrated at Assam Rifles Ground in Aizawl today. In his address, Chief Minister Zoramthanga urged the public to take a solemn pledge to rededicate themselves to work towards peace, unity and harmony for the nation. In Nagaland, state-level function was held at Civil Secretariat Plaza, Kohima, where Chief Minister Neiphiu Rio hoisted the tricolour and took salute. In his address, the Chief Minister said the Naga political issue remains the top priority of his government and assured that all efforts are being made to resolve the issue. In Jammu and Kashmir, Lieutenant Governor Manoj Sinha hoisted the tricolour at Bakshi Stadium in Srinagar. Addressing the gathering, he said, this year 1.27 crore tourists, including foreigners, have visited J&K. The figure includes a significant number of foreigners. The 77th Independence Day of India was celebrated by the High Commission of India in Bangladesh today. A large number of Indian community members took part in the celebrations at the Chancery building in Dhaka. In Sri Lanka, the 77th Independence Day was celebrated with enthusiasm in Colombo. To remember the sacrifices of Indian forces, High Commissioner of India to Sri Lanka, Gopal Bagle, laid a wreath at the Indian Peacekeeping Force Monument in Colombo. The News Services Division of Akashvani will broadcast a special bilingual program titled Vishwa Kshitij Par Bharat on the occasion of the 77th Independence Day. The participants are Kapil Dev, cricketer, Sunil Shetty, actor, and film producer Neela Madhav Panda, film producer and director Major D.P. Singh, war veteran and India's first Blade Runner, and Antaranandi, singer. Tune into 100.1 FM Gold Channel and additional frequencies of Akashvani at 9:30 p.m. tonight to listen to the special broadcast. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Nation celebrates 77th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi hoists national flag and addresses the nation from ramparts of Red Fort in Delhi. Prime Minister says centre and state government are working to restore peace in Manipur. Mr. Modi calls for collective fight against corruption, nepotism and appeasement. Government to launch Vishwakarma Scheme for traditional skilled workers next month. Prime Minister announces new plan to train women in operating drones through 15,000 self-help groups. Government to increase number of Jan Aushadhi Kendras from 10,000 to 25,000. And reports of Independence Day celebrations also pour in from states, union territories and Indian missions abroad. And with that, we end the midday news.